friends, welcome to my channel Only Bio. Today on request I am starting up with the chapter Nutrition and Digestion, and yes, your comments are definitely awaited in the comment box. So here we start with the chapter that is Nutrition. Now what is meant by nutrition? We all know that food provides us with nutrients. Why do we need food? We need food for our survival and for performing all the functions of the life, right? And all living organisms do definitely needs food, and the requirement may differ from one organism to another organism. Now, to start with, we can define nutrition as the process in which food is obtained and utilized as a source of energy. I repeat, the process in which the food is obtained. हमें खाना कैसे मिलता है और बाद में उसको हम इस्तेमाल करके वहाँ से कैसे एनर्जी डिराइव कर लेते हैं. We all know all living organisms utilize energy only in the form of ATP. So irrespective of that, we define nutrition as the way the food is obtained and is utilized as a source of energy. Now the food is the basic necessity of life and it provides us with nutrients, right? So food provides us with nutrients. Nutrients are nothing but the chemicals present in the food. These nutrients can be classified into two groups as the macronutrients and the micronutrients. Now what is meant by this? When I say macronutrients, macro means large. So all those nutrients that are required in larger quantities, we call them as macronutrients. These includes carbohydrates, fats and proteins, which we all require in larger quantities. And micronutrients are all those nutrients that are required in smaller quantities, trace quantities, which includes vitamins and minerals. Of course, along with this, the main nutrient or rather the main component of food is also water. Of course, that's needed in quite a large quantity. Okay, so this is why we need food. Now, depending upon the way the food is obtained, we can say that there are two main modes of nutrition. So let us come to the next one, that is the modes of nutrition. So as I said, there are two main modes of nutrition. Now what exactly are the two main modes of nutrition? I'm just talking about the main groups. We can say that the nutrition is of two types, that is autotrophic and heterotrophic. I said autotrophic and heterotrophic. Now what is meant by this? When we say autotrophic, the word auto means self and the word trophic means feeding. But it includes all those organisms which produce their own food. Of course, that includes the plants and the blue-green algae, because these are the only organisms they produce their own food. And rest all organisms are definitely categorized as heterotrophic. Now what is meant by heterotrophic? All those organisms which depend upon other living organisms for obtaining their food and energy, we call them as heterotrophic.
The word heterotrophic comes from two words, heteros, that is different, and trophism, that is feeding. So it is autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. अब जो अपना खाना है, ओके, उसमें सबके सब न्यूट्रिएंट्स हैं. किसी को वो ज़्यादा मिलते, कहीं कभी खाने में कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, कोई कम होता है, बट दैट डजंट हेल्प अस. सो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि डॉक्टर्स की सलाह होती है, न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं उनकी सलाह होती है दैट वी ऑल शुड बी हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट. Now let us understand this balanced diet. What is meant by balanced diet? Balanced diet means the diet that supplies all the nutrients in required quantities as per the age, sex and occupation. Of an individual. Now let us understand this a bit in details. I said diet that supplies all the nutrients in the required quantities. Like जो growing बच्चे होते हैं उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, उनका पूरा ओवरऑल न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा होता है. सेम रिक्वायरमेंट माइट नॉट बी देयर फॉर अ पर्सन हु इज क्वाइट लेथार्जिक. इन्हें जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं लेथार्जिक. सो ऐसे लोगों की जो डाइट की रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, राइट. सो जैसे जैसे अपना ऑक्यूपेशन होता है, अपना एज होता है, अपना जेंडर होता है, उस हिसाब से अपना जो डाइट का रिक्वायरमेंट है वो भी बदलते रहता है. फॉर एग्जाम्पल वी फाइंड दैट जो भी एजेड लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा भूख नहीं लगती क्योंकि उनमें एक्टिविटीज़ भी शायद कम हो जाते हैं. सो उनकी बॉडी की डिमांड्स जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं. सेक्स वाइज इफ वी सी देयर इज अगेन अ डिफरेंस इन द what you can say the demand or the need of the food. We find that the male gender slightly requires a higher kind of a nutrient supply as compared to the females, because might be there physic wise there is a difference and also the physical activity wise there is a difference. Occupation wise, let us compare कि there are two men, I mean both of the same age, let's say around 40, and one is in a banking sector wherein that person is being throughout the day doing his job, and but it's all more of mental activity, less physical. And the second one is a laborer who has more of a physical activity than mental. So दोनों का एज सेम है, दोनों का सेक्स सेम है, पर दोनों का बॉडी रिक्वायरमेंट शायद सेम नहीं है. Of course, the one who is a laborer will be requiring much and much of nutrient supply. So this is what is meant by it differs along with age, sex and occupation of an individual. So जब भी अपना डाइट थोड़ा सा बदल जाता है, मतलब बॉडी जो डिमांड करी उससे कम या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो वी से इट इज़ malnourishment. Malnourishment is nothing but disturbed nourishment. It may be overnourishment, it also might be undernourishment. नॉर्मली क्या होता है जब हम कहते हैं माल नरिशमेंट, ज़्यादातर लोग उसको रिलेट करते ओनली विद डेफिशिएंसी, बट दिस इज नॉट द केस. माल नरिशमेंट यानी इम्प्रॉपर नरिशमेंट, तो वो ज़्यादा भी माल नरिशमेंट है और ज़रूरत से कम खाना भी माल नरिशमेंट है. नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्टेप्स इन न्यूट्रिशन. So coming to the next one, that is the steps in nutrition. There are many steps in nutrition. To start with the first one, let us understand. First I would just list down the steps in nutrition, and then we'll go towards each one to study in details. First one is ingestion, second one is digestion,
third one is absorption, fourth one is assimilation, and the fifth one is egestion. So I repeat, there are 5 steps in nutrition. First one is ingestion, second one is digestion, third one is absorption, fourth one is assimilation, and fifth one is egestion. So let us understand each step in details. To start with the first one, that is ingestion. So I shall just clear this off. We are going to talk only about ingestion. Now, what exactly is meant by ingestion? Ingestion is nothing but the intake of the food through the mouth. जो हम खाना खाते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है इंजेशन. सो कंजम्पशन ऑफ फूड कहो या इनटेक ऑफ फूड थ्रू द माउथ कहो, एक ही बात है. सो वी से दैट इंजेशन इज नथिंग बट द कंजम्पशन ऑफ द फूड और इनटेक ऑफ फूड वाया माउथ. सो ये हुआ पहला प्रोसेस. लेट मी राइट इट. इट इज द कंजम्पशन और intake of food via mouth. Now, another thing, जो भी हम खाना खाते हैं, जितना भी खाना खाते हैं, जरूरी नहीं है कि सबका सब डाइजेस्ट हो ही, बिकॉज अपना रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होता है. और ज्यादातर ह्यूमन बीइंग हैज अ टेंडेंसी टू ईट मच मोर देन रिक्वायर्ड. नहीं, I'm not talking about only me. I'm talking about overall the entire human tendency. We all are basically foodies. We take a pride in saying that we are foodies. Actually, we are not foodies. I don't know how to categorize it, but yes, we tend to eat much more than required. So, जो खाना ज़्यादा खाया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो डाइजेस्ट होगा ही. वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. Now, let us understand the second step. That is digestion. So I hope first term is clear, and here I take you to the next. That is the second step. This was the first. The second step is digestion. Now what is meant by digestion? Let us understand. हम लोग जो खाना खाते हैं, the food that we eat is in the complex form. It is insoluble, non-diffusible and non-absorbable. Let us understand. जो खाना हम लोग ने खाया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, मतलब केमिकली वो कॉम्प्लेक्स है. इनसॉल्युबल, नॉट नेसेसरी कि एवरीथिंग इज इनसॉल्युबल. अगर कोई सब्सटेंसेस सॉल्युबल भी हो सकते हैं, but majority of it might be insoluble in the body fluids. Non-diffusible. What is meant by diffusion here? Here in this context, diffusion means the entry of these substances inside the cells. So it has to enter the cells. And non-absorbable one, that once again means the entry into the cells via the blood. क्योंकि अपनी बॉडी में एक ही ऐसा मीडियम है जो हर एक सेल तक पहुंच सकता है, दैट इज ब्लड. अब इसकी जरूरत क्यों है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. ईच एंड एवरी सेल ऑफ अ बॉडी रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स. पर हम जो खाना खाते हैं वो जाता किधर है? तो वो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में. पर इसका ये मतलब तो नहीं होता कि सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को खाने की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है. हर एक सेल को ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल तक पहुंचाए जाने जरूरी है. और ये पहुंचाएगा कौन? तो ये पहुंचाया जाता है वाया blood. So it is very important that these food substances should be entering the blood. But right now they are not in the form that they can enter in the blood easily. कोई substances blood में easy entry ले सकते हैं, पर अगर वो जो खाना है वो complex form में है, solid form में है और non-diffusible form में है, तो वो directly blood में नहीं जा सकता. That's why we require the process that is digestion.
So digestion में क्या होता है? तो digestion is the conversion of complex. All the food substances which are complex are converted into simple forms, soluble forms, diffusible forms, and absorbable forms with the action of enzymes. This is very important, and let me remind you, enzymes are also called as biocatalyst. ये catalyst का काम करते हैं living body के अंदर. That's the reason they are called as biocatalyst. Let me tell you. So complex form जो है, let's say for example carbohydrates. It might be in the form of starch. ये जो carbohydrates, because our food is mainly dominated with carbohydrates. This carbohydrates, take an example, the food that we eat is rice, chapati, bread, ये सब क्या है? तो this is mainly complex carbohydrate form, mainly starch form. So these are complex carbohydrates है, जिसे हम कहते हैं polysaccharides. So these carbohydrates, they undergo digestion and they produce what? So they produce simple sugars. In other words, I would say monosaccharides. Like glucose. Example, glucose. Okay? So ये जो conversion है from complex carbohydrates to simple sugars, I shall say this is a catabolic process. Overall, we can say that digestion is a catabolic process. Catabolic क्यों कहा गया? Because it's a breakdown process. Okay, जैसे carbohydrates can be broken down into simple sugars, वैसे proteins जो होते हैं, proteins का जब digestion होगा, तो these proteins will be converted into amino acids when they undergo digestion. और उसी तरह से the fats and the lipids, when they undergo digestion, they are broken down into fatty acids and glycerol. So ये जो conversion है, ये conversion कौन करवाता है? तो enzymes. And mind you, the enzymes are specific in nature. यानी जो enzymes carbohydrates पे काम करते हैं, वो enzymes proteins या fats पे असर नहीं करते, and vice versa. So we say that enzymes are specific in nature. अब इसमें भी please याद रखिएगा, polysaccharides का conversion directly monosaccharides में कभी नहीं होता. It's a gradual process. Polysaccharides will be first broken down to disaccharides and disaccharides to monosaccharides. Similarly, proteins are directly not broken down to amino acids. Proteins will be first broken down into proteoses and peptones. Proteoses and peptones will be broken down into polypeptides, polypeptides to dipeptides, and dipeptides into amino acids. This you would be studying in the biochemistry or the physiology of digestion that we should be taking up later. Then fats and lipids also might not be directly converted into fatty acids and glycerol in a single go. What I mean to say is that these are gradual processes. So ये जो भी होता है digestion, ये अपने digestive system के अलग अलग हिस्सों में होता है. ऐसे नहीं कि सबका सब digestion पूरा stomach में होता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है. Every organ of the digestive system has a different process or a different digestion capacity because of the enzymes present in their respective parts. So this is how you can define digestion. I repeat it. It is a catabolic process in which complex, insoluble, non-diffusible and non-absorbable substances are converted into simple, soluble, diffusible and absorbable forms with the action of enzymes. Okay. अब जैसे मैंने कहा कि जो खाना डाइजेस्ट होगा ही नहीं, वो आगे जाके absorb नहीं होगा. Let us understand the next step, that is absorption. So here we come to the next
step, that is the third step, that is absorption. Now what is meant by absorption? जैसे कि मैंने कहा कि जो सिंपलर फूड सब्सटेंसेस है वो बने किधर, तो वो बनते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, पर उनकी जरूरत बॉडी के हर एक सेल को है. सो यहाँ पर रोल आता है ब्लड का. मतलब ये जो भी सिंपल फूड सब्सटेंसेस बन चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इनका ब्लड में जाना बहुत जरूरी है. और जब ये ब्लड में पहुंच जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्सॉर्प्शन. इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन एब्सॉर्प्शन एज द डिफ्यूजन ऑफ simple food substances into blood so that they are transported to each and every cell of the body. So this is what is meant by this. अगर आपको लगता है डिफ्यूजन यानी क्या, तो यहाँ पर आप सिंपल ये भी लिख सकते हो द एंट्री ऑफ द सिंपल फूड सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड. सो ये जो सिंपल फूड सब्सटेंसेस हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग हिस्सों में बन चुके हैं, ये धीरे धीरे करके ब्लड में एंटर हो जाएंगे और via blood they will be transported to each and every cell of the body, and this is what is called as absorption. अब सेल तक खाना या न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए. अब इमेजिन कीजिएगा कि सेल के अंदर से 1,00,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अंदर चले गए एज एन एग्जाम्पल. पर जरूरी नहीं है कि उस सेल को 1,00,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स उसी वक्त जरूरी होंगे. नॉट नेसेसरी. The cell might not be needing this much of glucose at that particular moment. So what will happen? It will utilize whatever glucose it needs, and the extra glucose cell बाहर नहीं फेंकेगा, cell उसे store करेगा so that अगर फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़े तो बॉडी के पास कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स रहेंगे. So here we come to the next step, that is the fourth step called as the assimilation. So let me tell you, assimilation is an anabolic process in which simple food substances are converted into complex forms and stored in the protoplasm of the cell. Let us understand this. Now what is meant by anabolic process? Anabolism is exactly opposite to catabolism. कैटाबॉलिज्म में मैंने क्या कहा कि इट्स ब्रेक डाउन, मतलब कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म. अब जब उल्टा होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म. सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होना है, जो सिंपल फूड सब्सटेंसेस सेल के अंदर पहुंचाए गए, थोड़े बहुत इस्तेमाल हुए, पर जो इस्तेमाल नहीं हुए वो सेल उन्हें फेंकेगा नहीं, सेल उन्हें वापस से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करेगा इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल. Protoplasm is nothing but the living matter inside the cell, and this process is called as assimilation. मतलब once again, जो glucose है शायद it will be converted into glycogen, fatty acids will be converted into fats, amino acids will be converted into proteins and stored in the body, so that they can be used whenever in future the body might need it. Now I come to the last step, that is egestion, which is nothing but it is the removal of undigested matter
from the body, which is also called as defecation. Now please remember one thing, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ ना वो एब्सॉर्ब होगा ना वो असिमिलेट होगा. सो बॉडी में अगर वो खाना रहे भी तो वो कोई भी फायदे का नहीं होता, उल्टा उससे नुकसान बढ़ सकता है. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसे बाहर फेंकना जरूरी है. सो ऐसा खाना जो हम लोग ने खाया जरूर है पर सेल तक नहीं पहुंचा क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो इस पर्टिकुलर अनडाइजेस्टेड खाने को बाहर फेंकना is called as egestion. That is done via anus, that is the posterior most part of the digestive system, and इस process को हम कह सकते हैं defecation. And please remember, egestion is altogether different from excretion. Excretion is the removal of metabolic waste products from the body. मतलब कोई ऐसे सब्सटेंसेस जो डाइजेस्ट हुए, डाइजेशन के दरमियान कोई टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंसेस बने या नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस बने जो बॉडी में रहने देना खतरनाक हो सकता है. सो ऐसे सब्सटेंसेस को बाहर फेंकना इज एक्सक्रीशन. But I'm talking about egestion, which is altogether different. यानी it is the removal of undigested matter, मतलब जिसका मेटाबॉलिज्म अपने बॉडी में हुआ ही नहीं. ठीक है. So these are the steps in nutrition. In the next lecture, शायद in the next thing, as per what I get my schedule on, I shall be discussing about the human digestive system. Hope you like it and do comment. Thank you.